Our students, we were talking about a poem, A Darkling Thrush, written by Thomas Hardy. Previously, we had a brief background about the writer, about the background of the poem, why this piece of art was produced by Thomas Hardy. And I also told you, being a pessimist, realist, and naturalist, what were the emotions which were shared or expressed by Thomas Hardy. Basically, when you think about the darkling, so let me tell you the meaning of darkling means darkening. It has been taken from darkness. Darkening, स्याह करता हुआ, स्याह होता हुआ. Thrush is standing for a bird. Darkening, that is, darkling is standing for darkness, darkening, and thrush means a bird. Now, when I explain this poem, in the later phases, definitely you will come to know what I really want to say about that. Now, it's the time to guide you people about one thing. The poem is basically based on the decline and the decay of Western civilization. In the previous lecture, if you remember, the thing which was being discussed, that was about the publishing date of the poem. So I told you, basically that was the end of 19th century and the beginning of the 20th century, and basically it was decaying, it was about to die. The old traditions and the old, the ways were being thrown off, and the people were about adopting new ways of writing, earning, so on. So this was the thing which was being lamented by the poet. यही वो चीज है जिसका दुख वो थॉमस हार्डी मना रहा था. और मैंने कहा दिस इज अ लिरिकल पोएम. व्हाई? ही वाज शेयरिंग हिज ओन ओपिनियंस एंड इमोशंस अबाउट द लास्ट phases of the 19th century. Why? Because it was December when the poem was being produced, and that was basically the end of 19th century, or in other words, I must say, the death. Now, in this poem, everything will be discussed in the form of an extended metaphor. What is an extended metaphor? Metaphor, a comparison, direct comparison of two different things. But when the comparison is taking place in almost every stanza, so you call it extended metaphor. Now, what is that extended metaphor which will be utilized by the poet in the poem? What is that? Just see. Over here, the poet is going to talk about a landscape. Landscape, or an area managed by human beings. This is basically not the landscape. Poet will be using the word landscape, but the moment I use this word while reading or explaining your stanzas, you must have Western civilization in your mind. He is finding this landscape in a very, very worn out form. It was not being, managed by human beings anymore. It is in a very pathetic condition. So now the poet is basically talking about landscape. But on the other hand, I must say allegorically, he is talking about the Western civilization which is towards the end and which is bound to change, which is definitely becoming the source of great, I must say, hopelessness, desolation, sadness, and I must say depression for the poet. He's quite depressed. Now, stanza-wise, we will be discussing these things. When we talk about the first stanza, we will be talking about, bleak imagery. Bleak, in which things are going to fade down, going to move towards darkness, going towards the death. The setting where it is happening and what is the time when this thing was being discussed, and human isolation will take place. How? Let me talk about that. But two things you need to keep in your mind when I talk about the Western civilization. So you must keep in your mind the old ways of writing were being neglected, were bound to change, because on the other hand, modernization or urbanization and industrial revolution were taking place. These were the movements which were standing ahead, and that particular movement, the poet was totally hopeless. He was out of mind what gonna take place in the coming century. He was quite associated with the 19th century. He was quite affiliated with the ways, with the traditions, with the writing styles, with the working styles
of the 19th century, and now since it is going towards its annihilation, towards the end, so that is making the poet quite sad. He does not want to leave it. Rather, these are his own emotions about 19th century, but he's basically out of mind. He has no idea what will be happening in the future. So that is what is being blamed by the poet. He is not calling it the death of a century. He's calling it the death of the whole humanity, especially the people, those who are associated with that land. So let me explain how, in what words he is going to discuss these things. Come towards the very first stanza. I would like to divert your attention towards the very first, I must say, 71. And the very first stanza is, if you allow me, I would like to go through. I leant upon a coppice gate. When you talk about the coppice gate, this is indication towards this landscape, giving the reference of the landscape, and it has got a wooden gate. When frost was spectre gray. Now the poet is of the opinion that there is an area, I mean imagination, his own feelings and emotions. I told you this is extended metaphor. He's of the opinion that there was a piece of land, an area, which he is calling landscape, and when he went there, he leant on the door and he saw what the condition of that piece of land which was full of woods, rather I must say forest, but that was being managed by the human beings. Right now, when the poet moves there and leant on the door, so what he found, when frost was spectre gray, he said frost was covering everything in the garden. Here the frost is the symbol of what? Frost is the symbol of death. Symbol of death. He is saying that it is spread or covering every area and looking quite gray. Looking quite gray. I mean, losing its color, radiance, because it was the time of, the ending time of the day, and the sun was, and then he says, and the winter's dregs made desolate, a winter's dregs made desolate the awakening eye of day. The poet is of the opinion that when he leant over the gate and saw the condition of the garden or the area or the landscape, it was fully covered with what? With the frost. He is showing the very gloomy face of that area. It was looking quite gloomy, dreadful, dangerous. Why? The situation was like that. And he's of the opinion that, and just because of its darkness, the light of the sun, इधर एक metaphor use किया गया है, eye of day. Eye of day is representing what? Symbolically sun. The light of the sun is also becoming quite dim. Just because of the gloomy atmosphere, the light of the sun was not as sharp as it should be. So it is also blinking. This is the night of what? This is the situation of what? Winter. So what is happening in the winter? Writer is of the opinion that the frost is covering everything and giving a very ghostly look, a very gloomy look, and the last winter day made the appearance or the light of the sun dim as well, bleak as well, as it is descended now, as it is going to vanish away, क्योंकि ये खत्म होने वाला है. तो symbolically writer is giving the reference of what? The 19th century, the sun of the 19th century is about to descend, about to set, and the new sun will I must say emerge, come out, but when and what will be the direction and what will be the impacts of that, he himself doesn't know. So till now यहाँ तक जो बात हुई वो ये है, राइटर एक एक्सटेंडेड मेटाफर यूज कर रहा है, बात कर रहा है एक लैंडस्केप की. जब वो उसे देखता है तो वो ये बता रहा है कि भाई वो सारी की सारी फ्रोस्ट से बर्फ से जमी हुई है और ग्रेश कलर शो कर रही है, और ग्रेश समय ग्लूमी, एक दुखी सा एक नजारा पेश कर रही है, और इस दुखी सैड एनवायरनमेंट की वजह से
कलर की वजह से जो सूरज है उसकी अपनी रोशनी को भी इसने बहुत मध्यम बना दिया है। क्यों? इट इज क्रिएटिंग मेलनकली, एक दुखी इन्वायरमेंट क्रिएट करना। दीज आर व्हाट, अगर सिंबॉलिकली देखा जाए, द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स अबाउट द गोइंग or the passing away or the last day of the 19th century, which is creating such feelings into the mind of the poet because he himself is a pessimist and he is quite sad over the demise or the decay of that. अच्छा, इसका एक और मतलब भी हो सकता है। His opinion that, आगे पढ़ता हूं फिर बताता हूं, कहता है the tangled vine stems coat the sky. फॉर एग्जाम्पल, एक गार्डन में आप खड़े हैं और एक फॉरेस्ट टाइप के लीजिए, आप एक छोटा सा एरिया के लीजिए जो वुड्स और दरख्तों से भरा हुआ है और बुशेस हैं वहां पे, लेकिन उनको काटा जाता है, उनको ख्याल किया जाता है ताकि ये रफ ना दिखे। बट राइट नाउ द पोएट इज ऑफ द ओपिनियन दैट दोस क्रीपर प्लांट्स जिनकी कटिंग करनी थी वो ऊपर तो जा रही थी, लेकिन उनका रुख ऊपर की तरफ था। यहां पर उसने एक सिमिली यूज की है, कह रहा है द टैंगल बाइंड स्टेम्स कोट द स्काई लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स। लायर इज जस्ट लाइक अ हार्प, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। कह रहा है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी स्ट्रिंग, जिसकी तारें टूटी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था उन बेलों की, या वो क्रीपर प्लांट जो उस लैंडस्केप के अंदर मौजूद थे, उसकी तमाम जो बेलें थी वो ऊपर की तरफ तो थी लेकिन उनकी ट्रिमिंग नहीं की गई थी, उनका ख्याल नहीं रखा गया था, जिसकी वजह से वो बहुत रफ दिख रही थी। सेम लाइक द ब्रोकन स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब पता है क्या है? ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज शोइंग द डिसहार्मनी अमंग द पीपल। जो लोग थे ना, उनकी डिसहार्मनी शो कर रहा था, क्योंकि एक स्टेज पर नहीं थे लोग, कुछ यहां कुछ यहां कुछ वहां, यानी जो ओल्ड ट्रेडिशंस थी। एक और मतलब देख लीजिए, इससे मुराद पोएट्री, इससे मुराद उनके तौर तरीके, राइटिंग स्टाइल, उनके वेज, सब कुछ चेंज होने जा रहा था। तो ऐसा लग रहा था सबका कनेक्शन अब कट चुका है, सबकी सब कट चुकी हैं, सब वो तारें जो जुड़ी हुई थी अब वो कनेक्शन ज्यादा देर कनेक्टेड नहीं रहेंगे। राइट नाउ द पोएट मीन्स दैट। ठीक है, और आगे क्या कहता है? And all mankind that haunted me, कह रहा है और वो तमाम लोग, the people, those who are living near that landscape had sought their household fires, or they have moved away because it's a winter and the cold day, just to protect themselves from the coldness and the bitterness of that weather. They move towards their own shelters and they are just enjoying the fire at their home. They are just enjoying the warmth. तीन चीजों को बताया था। The very first thing, bleak imagery. What is? How is that landscape looking? That is looking in a very pathetic condition. I mean, the land where the people used to take care of that, now it is in a very, very, pathetic condition. It is unruly. It is very rough. It is worn out. I mean, everything is, in a great disorder. Same is the case with the civilization, which used to be, controlled by the Western civilization. Now their own traditions, ways, and old traditions are, passing away, moving away, coming towards decline, and coming towards an end, just like that. And then the next thing, bleaking imagery. It is looking, as I talked about, the setting, landscape, and like human isolation. How? Instead of taking care of that, sticking to that, showing vitality, showing braveness, showing resilience, everybody has taken his or her own way and they have moved towards their own shelter. It means they are looking even the least interested now in that landscape. Moving towards or giving the reference of the civilization. Civilization is what? It is made by the people. If the people are not going to take care of the traditions, norms and traditions, the things, the ways, the writing styles, so change is bound. It is imminent. It will take place. So same was the case with that. The poet, on the other hand, wants to using this extended metaphor, showing what is of the opinion that as on one hand, landscape which used to be managed by the human beings, now in a very bad condition and giving a very ghostly look and gloomy look. Same is the case, and all the vines and the creeper plants are disconnected, which are going up. But right now they are in a great disorder because they have not been pruned, they have not been cut, they have not been managed properly, which used to be managed by the human beings. So the same human beings who were taking care, they themselves have left that
and they have gone away. Same is the case with the Western civilization, which was so rich, which was so wonderful. It was having its own norms and tradition, but everybody is going away and taking its own shelter and thinking about one's own self. ये किस तरफ रेफरेंस है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. बजाय इसके कि वो यहीं पर जुड़े रहते, यहीं पे काम करते, वो लोग जो खेतों में काम किया करते थे, स्पेशली वीविंग या आइस मेकिंग, लेकिन उन्होंने इस बात को प्रेफर किया कि बजाय हम यहाँ पर काम करें, बजाय हम यहाँ पर मुश्किल में काम करें, व्हाई नॉट वी शुड मूव टुवर्ड्स द सिटीज और इंडस्ट्रियल एरियाज, जिसे हम कहते हैं अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां लोगों ने देहातों का रुख छोड़कर शहरों का रुख करना शुरू कर दिया. तो वो यही तो रेफरेंस दे रहा है कि वो लोग जो खुद इसका ख्याल किया करते थे, वो तो खुद आइसोलेशन की तरफ बढ़ गए, वो तो खुद इससे जुदा हो गए. तो इस सिविलाइजेशन का जो ये हाल है वो इनके अपने हाथों से है. ये उस तरह अब नहीं रहे, इंसानियत इसकी जिम्मेदार है. सो दैट इज द रीजन द पोइट इज लेमेंटिंग. वो इसका दुख मना रहा है, गम मना रहा है कि ये अब अपने इख्तिताम पे जा रही है. आने वाला वक्त कैसा होगा, नोबडी नोज दैट. एनी कंफ्यूजन, एनी डिफिकल्टी? आगे बढ़ता हूं. इसमें कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं, वो मैं बता देता हूं. कॉपिस ग्रेट मैंने आपको बताया लैंडस्केप. फ्रॉस्ट का मतलब हमें पता है. स्पेक्टर ग्रे का मतलब है ये एक वेरी ग्लोमी प्रेजेंस को कहते हैं. ग्लोमिंग एक खौफनाक किस्म की आप कह सकते हैं कि शक्ल या अपीयरेंस, जाहिर. फिर कहता है विंटर्स ड्रैग्स. ड्रैग्स कहते हैं द रिमेनिंग पार्ट, यानी विंटर क्यों? क्योंकि विद द एंड ऑफ दिस दिसंबर, जो थोड़ा सा हिस्सा दिन का रह गया या रात का, जैसे ये खत्म होगा तो जाहिर बात है 20th सेंचुरी का आगाज हो जाएगा. ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. फिर आगे कहता है बाइंड स्टेम्स. टैंगल्ड बाइंड स्टेम्स क्रीपर प्लांट की तरफ इशारा कर रहा है. स्कोट का मतलब कह रहा है केयर्ड, जो ऊपर लगी हुई थी, जो ऊपर की तरफ जा रही थी, जिनका ख्याल किया जाता था. ठीक है. फिर आगे कहता है द स्ट्रिंग्स ऑफ द ब्रोकन लायर्स. लायर्स यहां पर लेयर्स नहीं पढ़ना, इसको लायर्स पढ़ना. इसका इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. इसको इसने उससे तशबीह दी, जैसे वो कट गई, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तारें कट गई हो और अब उसका बजना या वो धुनें बजना, इसे कहते हैं डिसहार्मनी, मुश्किल है. और आखिर में क्या कहता है? वो लोग जो करीब रहे. हॉन्टेड का मतलब द पीपल दोज हु वर अकोमोडेटेड ओवर देयर, जो वहां पर रह रहे थे, लिविंग देयर. नाउ दे हैव गॉन टुवर्ड्स देयर ओन शेल्टर. अब वो अपने घरों की तरफ निकल गए. क्या शो कर रहा है? वो भी स्केपिस्ट बन गए, यानी उन्होंने भी रुख कर लिया उस जिद्दत पसंदी का जो चेंज आया. बजाय इसके कि वो इस पे स्टिक करते, इसको कायम रखते, इसको मेंटेन रखते, बल्कि वो आगे निकल गए. अगला स्टेंजा सुनिएगा. पहले स्टेंजा में 3 बातें समझ आ गई. ब्लीक इमेजरी जो मैंने आपको लैंडस्केप की बताई, यानी एक मरती हुई मुरझाई हुई हालत. उसके बाद मैंने आपको सेटिंग बताई, कहां हुआ, लैंडस्केप ही था. टाइम आपको क्या बताया कि भाई ये विंटर का इख्तितामी मरहला जो थोड़ा सा रह गया था, ठीक है, उसकी बात कर रहे थे. और आखिरी ह्यूमन आइसोलेशन, जहां सारे के सारे उस लैंडस्केप को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए, यानी अपनी सिविलाइजेशन को छोड़कर मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर गए. फिर आगे क्या कहता है? द लैंड्स शार्प फीचर्स सीम टू बी, कंपैरिजन देखना, द लैंड्स शार्प फीचर्स सीम टू बी द सेंचुरीज कॉप्स आउट लैंड. क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो मैंने हालात बताए ना, जो फीचर्स बताए हैं, किसके? लैंडस्केप के. दे आर लुकिंग लाइक द डेड बॉडी ऑफ व्हाट? डेड बॉडी ऑफ सिविलाइजेशन. ऐसा लग रहा है कि ये इसकी डेड बॉडी है. किसकी? सिविलाइजेशन की. इट इज लुकिंग लाइक द डेड बॉडी ऑफ द सिविलाइजेशन और द सेंचुरी. क्यों कह रहा है? जो हालात मैंने इसके देखे अभी. He is going to tell what? फिर से सुन लीजिए. The land's sharp features. लैंड की जब बात करूंगा लैंडस्केप की, तो क्या दिमाग में आएगा? You are supposed to think about the civilization. कि जो सिविलाइजेशन का आबा हाल होने जा रहा है, जो खत्म होने जा रही है, जो ट्रेडिशंस चेंज हो रही है, राइटिंग स्टाइल भी बदल गए, लोगों के काम करने के, लोगों की सोच बदल गई. कह रहा है ऐसा लग रहा है कि ये क्या है? This is what the centuries call outland. ऐसा लग रहा है कि उसकी लाश सामने पड़ी हुई है. और आगे कहता है his crypt द क्लाउडी कैनोपी. और इसका जो मकबरा है वो ऊपर लहलहाते हुए हल्के जो बादल हैं वो इसका मकबरा बन गए हैं. वो इसका मकबरा बन चुके हैं, यानी इसको अंदर दफन कर दिया. ऊपर बादलों को किसके लिए यूज कर रहा है? इसके मकबरे के लिए. दे आर जस्ट बिकमिंग आर मेकिंग इट्स टूम. और आगे कहता है द विंड हिज डेथ लेमेंट एंड द विंड व्हिच इज ब्लोइंग लुकिंग एज इफ एज दो इट वाज सिंगिंग अ सॉन्ग. और ऐसा लग रहा है हवा जो चल रही है वो इसके दुख में कोई गाना गा रही हो. तो ये क्या कर रहा है? एक तरफ लैंडस्केप का नुकसान बता रहा है, लेकिन यहां पर ये सारी की सारी इसकी अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस हैं. किसके बारे में? जाती हुई सदी के बारे में. क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो सामने सबसे पहली बात की, ये जो मैंने आपको लैंडस्केप से मुराद सेंचुरी, यानी
वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो गुजर गई, कह रहा है ऐसा लग रहा है कि जितने फीचर्स भी बताए हैं उसके कि लोग बढ़ गए और तौर तरीके छोड़ दिए और दूसरे तरीकों पे लग गए, ऐसा लग रहा है कि ये उसकी लाश बन चुके हैं और ये जो बादल है ये अपनी कनोपी से इसका टूम यानी इसका मकबरा बना रही है और ये जो हवा चल रही है ऐसा लग रहा है कि ये इसकी मौत के ऊपर एक दुखी गीत गा रही है। और आगे कहता है द एंशिएंट पल्स ऑफ जर्मन बर्थ, और क्या कहता है कि द ओल्ड अर्ज ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ग्रोइंग हैड मूव्ड अवे और वैनिश्ड अवे। कह रहा है वो जो पुराने तौर तरीके थे ना जिसमें मौत और दोबारा रीबर्थ वाली बात होती थी, खत्म हुआ फिर शुरू हुआ, खत्म हुआ फिर शुरू हुआ, अब ऐसा लगता है कि एक चीज खत्म हुई और दोबारा अब इसके शुरू होने के कोई चांसेस नहीं है, ये डेथ मुझे परमानेंट लग रही है। और क्या कहता है एवरी स्पिरिट अपॉन द अर्थ, एवरी स्पिरिट यानी जमीन पर हर वो शख्स जो जी रहा है मेरी तरह, सीम fervorless as I, कह रहा है and every creature on the earth is looking as depressed as I am right now. Why? Just over the end of the century. Can you tell me? क्या बात समझ आई? फिर से सुन लीजिए बेटे, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था एक्सटेंडेड मेटाफर की बात हो रही है और एक्सटेंडेड मेटाफर जहाँ लैंड या लैंडस्केप की बात होगी वहां पर सिविलाइजेशन का तस्करा जरूर होगा। पोइट ये कहना चाह रहा है कि जो फीचर्स मैंने आपको मोटे मोटे बताए, क्या बताए कि भाई इस वक्त इसकी हालत बुरी है, वो एरिया वुड एरिया या वुडलैंड जिसको मैनेज करते थे ह्यूमन बींग्स, आज उसको कोई नहीं देख रहा, तो उसके हालात इतने बुरे कि फ्रोस्ट जमी हुई है और उसकी शक्ल बहुत दुखी नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से जो सूरज है वो भी मध्यम पड़ गया है। कहता है इन फीचर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि ये डेड बॉडी पड़ी हुई है किसकी, किसकी, लैंड की, लैंड बोले तो सिविलाइजेशन की, सेंचुरी की। और आखिर में क्या कहता है, फिर कहता है और ऐसा लग रहा है कि ये बादलों ने इसका एक मकबरा बना दिया है और चलने वाली हवा क्या कर रही है, इसके दुख में एक दुखी गीत गा रही है। और आखिर में क्या कहता है, फिर कहता है और ऐसा लगता है कि वो जो पुराने तौर तरीके थे, पुराने तौर तरीकों से मुराद जो ट्रेडिशन थी, जो सिविलाइजेशन थी जिसमें खत्म होना और शुरू होना ये एक ट्रेडिशन थी, लेकिन कहता है ऐसा लगता है खत्म तो हो गया, शुरू होने के कोई चांसेस नजर नहीं आते। शायद कैसे, मतलब एक दौर खत्म हुआ सेंचुरी, तो दूसरी सेंचुरी में आने वाले लोग नए होंगे, हुक्मरान नए होंगे, देखने वाले नए होंगे, रिवायत नहीं होंगी, हो सकता है कि दोबारा वो चीजें अब दोबारा शुरू नहीं हो सकती जो सेंचुरी छोड़कर जा रही है, आने वाले अपने तरीके पकड़ेंगे। और कहता है कि यहां पर आस पास द पीपल दोज हु आर लिविंग नियर बाय, कहता है और वो लोग और जमीन पर रहने वाली हर वो मखलूक, मैं और मेरे साथ जितने भी लोग हैं सबके सब इतने ही मायूस हैं जितना कि मैं दिख रहा हूं। सो अप टू दिस प्लेस इट्स इनफ टुडे। इंशाल्लाह व्हेन आई कम टुमारो आई विल डेफिनेटली बी टॉकिंग अबाउट द रिमेनिंग 2 स्टैंजास। और इन 2 स्टैंजास के बारे में याद रखना बेटे, यहां तक जो बात हुई थी ना, ये डिके और डेजोलेशन और पेसिमिज्म यानी इसके डेथ के ऊपर बात हुई थी, किसी उम्मीद के ऊपर बात नहीं हुई थी, सिर्फ दुख के ऊपर बात हुई कि भाई ये अब खत्म हो चुकी है, खात्मे के ऊपर, एनिहिलेशन के ऊपर बात हुई है। अब जब हम अगले 2 स्टैंजास पढ़ेंगे तो देखते हैं कि उसके अंदर क्या बात होगी। थैंक यू वेरी मच। इट्स इनफ फॉर टुडे।